चलो ठीक है. All right. So today we are doing terms of credit. Terms of credit का मतलब है conditions on which anyone will give you a credit, a loan. Conditions on which any person, this person can be one single individual, it can be a bank. ठीक है, a simple person or a bank, on which condition he will give you loan. ये conditions को हम बोलते हैं terms of credit. Now market बेटा चलता ही कैसे है कि no one has sufficient amount of money. सारा ना borrowing and giving back का game चल रहा है market में. As we have seen in the previous example, a shoemaker was able to make 3,000 shoes and sell it only because he was able to procure a loan. उसको कहीं से लोन मिल रहा था. खुद की इनकम से he was not able to make so many shoes. So the entire market is about borrowing, a borrower and a creditor. Someone who's giving a loan and someone who's taking the loan. बट लोन ऐसे ही किसी को भी नहीं देना है बच्चे. लोन देने के लिए आपको कुछ क्रेडिबिलिटी चेक करनी है. यू नेवर गिव अ लोन टू अ बेगर who's there on the street, right? You always check whether the person is in a condition to return the loan or not. आप दोनों probabilities लेके चलते हो that your money will be returned. If it is returned, आपको किसी बेनिफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ वो रिटर्न हो रहा हो. And the second condition, if your money is not returned, then what you can do? Then what option you have? So terms of credit में हम दोनों चीजें count करते हुए we have certain condition which is also telling you why should I give you money. Suppose हेमंत के पास 100 rupees है and Rihanna is in need of it. Why should Hemant give Rihanna this money? Because Rihanna gives a promise, Hemant, I will return you back at a 10% interest. So Hemant thinks for 1 month अगर मेरे पास ये money रहा तो it will be still 100 rupees only. लेकिन अगर मैंने Rihanna को ये 1 month के लिए दे दिया, she will give me back 110 rupees. So here Hemant has a profit of 10 rupees. And is 100 rupees ko Rihanna will utilize for whatever business she is doing and she will make her own profit. So it's a win-win kind of situation. She is also winning, he is also winning. Both are in a profit situation. So first thing while giving a loan or a credit is, what is the interest rate at which a loan is given? If Hemant charges 100% interest, which means 100 rupees he is giving and he's saying, give me back 200 rupees. And Rihanna will say, this is exploitation. ये तो गलत है. Right? This is too much to be charged. So she will not be in a condition to take this loan. So your interest rate has to be reasonable such that a creditor, when he offers that rate, there should be borrower in the market. Higher your interest rate, lower are your number of borrowers. आपका जितना इंटरेस्ट रेट हाई होता रहता है बेटा उतना कम लोग उस वाले लोन को लेते हैं. रियल सिचुएशन इज दैट इन बैंक्स इफ यू गो people come for education loan, people come for car loan. Ideally बच्चे if your society becomes more and more educated, education के लिए लोन लेने आते हैं अगर, ठीक है, तो आपकी सोसाइटी में एजुकेटेड लोग जिनको जॉब्स मिलेगी एटसेट्रा एटसेट्रा एंड जॉब मींस रीपेमेंट विल बी इजी, तो आइडियली बैंक शुड बी गिविंग मोर लोन्स टू एजुकेशन. लेकिन बैंक ज्यादा लोन देता है बेटा कार के लिए. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? मैम बिकॉज कार वन टाइम पेमेंट है एंड मैम स्टूडेंट्स जो होते हैं दे कैन नॉट रीपे द लोन इजीली. करेक्ट. एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आपने सपोज इंजीनियरिंग करने के लिए लोन लिया, you take it in 2022 first year of your engineering.
4 ईयर में तो बेटा कंप्लीट होगी इंजीनियरिंग, तो बैंक को 4 साल तो कुछ पेमेंट आने नहीं वाली। देन इफ यू आर नॉट एबल टू फेच अ जॉब फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट तो वेट करो। सो ये लॉन्ग टर्म बैंक क्यों रिस्क ले? कार लोन का मतलब इफ यू कैन अफोर्ड अ कार विच इज अ लग्जरी आइटम, इसकी ईएमआई एक तो तुरंत स्टार्ट होगी, फर्स्ट थिंग। और अगर आप Ma'am, डिफॉल्ट but करते हैं, outside, ma'am, it's हाँ, considered as a necessity. Ma'am, we have done it in class 9, ma'am. Like in India, car is still a luxury, mm-hmm. but like in countries which are more developed, it's like a necessity. Yes, actually, Aryan, if you will see the developed countries, ठीक है, जैसे यूएस की बात करें तो until and unless you are living in the very populated heart of the city, तब तक तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है। बट अदरवाइज इफ यू आर योर ऑफिसेज आर वेरी वेरी डिस्टेंट, तब वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं है, यू हैव टू हैव अ कार देयर। लेकिन इंडिया में ऑपोजिट है, ठीक है, इंडिया में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोर इजिली अवेलेबल कंपेयर टू योर लग्जूरियस सिंगल ओनर जो हो कार का, right? So yes, standard of living does affect how many cars should be there and what is a necessity, what is not. For example, US में AC air conditioner बच्चे it's a necessity, वहां पे कभी लाइट Yes, ma'am. जाती ही नहीं है। So if you ask them about what all are the 5 things very important for life, they probably will not even mention electricity because they don't even know what is a power cut like. बट इंडिया में वी नो हाउ अ पावर कट फील्स लाइक। आपका तो इन्वर्टर का बैटरी भी ड्रेन हो जाता है, राइट? तब तक भी पावर नहीं आती है, 10-10 घंटे का पावर कट देखते हैं हम लोग। सो योर नेसेसिटी डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द कंट्री, ठीक है? सो कमिंग बैक टू योर कार योर लोन्स, फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। Now, I was giving you the example of car loans and education loans. एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट बेटा बहुत हाई है कंपेयर टू कार लोन्स का। द ओनली रीजन इज टू डिस्करेज पीपल टू टेक इट। देखो, बैंक डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकते कि हमें नहीं देना है, बिकॉज आरबीआई टेल्स व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन्स हैज टू बी गिवन फॉर विच सेक्टर। आरबीआई का अगर डायरेक्टिव आया है, डायरेक्शन आया है, तो आपको एजुकेशन लोन भी देना पड़ेगा। हाउ डू यू डिस्करेज इट? यू जस्ट डिस्करेज इट बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज। अपने आप ही कोई लेने ही नहीं आएगा इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे। कार लोन का आप इंटरेस्ट रेट लो करके रखोगे, देयर बी पीपल रनिंग लाइक एनीथिंग। कमिंग दिस दिवाली सीजन, देखना कार की वेटिंग आ जाएगी 4-4 महीने की, इतनी बुकिंग्स हो जाती है, because Diwali is one occasion where people want to buy new things. So first thing is interest rate is going to be a term of condition for the credit. Second is collateral. I have discussed this in a previous class, which is collateral is anything that you are going to put forward as your security, as your backup. It's everything that every asset that you own, asset is going to be something which is valuable. Every asset that you are going to own, which is going to have it has cost you a huge amount of money, and if you sell it later on, it will be still valuable. हर उस चीज को आप मेंशन करोगे when you are taking a loan. The idea is if you default, अगर आपसे लोन वापस नहीं हो पाया, bank will come into your area and pick up your asset and sell it off so that it doesn't suffer a loss. ठीक है, जैसे जेट एयरवेज, sorry, Kingfisher Airlines. You were probably very small. Ma'am, I Kingfisher think Jet Airlines Airways is by, also coming back. yes, that's coming back. Kingfisher जो airlines है, Vijay Mallya, this airline used to be a premium airline. It really used to give an experience of मतलब a very quality experience of flying. And जितना ये जल्दी टॉप पे पहुंची बच्चे, उतना ही फटाफट इसका डाउनफॉल आया।
right? For whatever strategies it was using, it defaulted like in crores of rupees. और जब ये डिफॉल्ट कर गई, ऑब्वियसली एज यू नो, जो लोन का पैसा है बच्चे वो कहाँ से आया है, बैंक ने कहाँ से दिया है? इट हैज गिवन द डिपॉजिटर्स मनी ओनली। जो भी लोग बैंक में डिपॉजिट करा के गए थे, उसी का कुछ परसेंट बैंक लोन में देता है. So if they have defaulted, banks are answerable to the depositors also. So from where will the bank retrieve the money? Bank has sold many bungalows of Vijay Mallya. Now problem is बच्चे लोन है suppose 10,000 crore का, बंगलो जो बेचा है वो है 56 crore. क्या ही होगा उससे? Ma'am, ये same thing, ma'am, was happening with Nirav Modi. Yes, all the big defaulters of India. Yes, ma'am. Okay, so first condition is the interest rate. Second condition is बच्चे collateral. Now collateral ऐसा नहीं है कि I just write I own a car, I own a house. It has to be supported by documents. So collateral has to be supported by documentation work. आप बोलते हो आपकी इतनी इनकम है, इनकम कहाँ है? स्लिप दिखानी पड़ेगी, जो सैलरी स्लिप. रेंटल इनकम है, कहाँ है? दिखाना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट. हाउस के पेपर्स दिखाने पड़ेंगे. ठीक है, एवरीथिंग हैज टू बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन. एंड द फोर्थ कंडीशन बिफोर गिविंग यू अ लोन इज द मोड ऑफ रीपेमेंट. वापस कैसे करोगे पैसे? इंस्टॉलमेंट में करोगे तो कैश करोगे, कौन से अकाउंट से कटवाओगे? चेक दोगे या आपका क्रेडिट कार्ड से कटेगा? व्हाट विल हैपन? That all has to be stated while picking up a loan from a bank. जब आप ये फॉर्म भर देते हो एक लोन का बच्चा, then what happens? Some relationship manager from the bank comes to your place for verification. आपने जो घर मेंशन किया है वो घर है आपके पास? जो गाड़ी मेंशन करी है, इज इट द सेम कार? आस पड़ोसी सबसे आपका ना क्रॉस वेरिफिकेशन करके this person he sends an okay report. Only then you receive in your account the amount of money that you have asked for. और जिस दिन से ये पैसा आता है बच्चे, from 30 days, next 30 days your EMI will start. Terms of condition, ये terms of credit बच्चे, any doubt anyone has in this? No, ma'am. मैम ये नहीं, बुक में मैम अभी खोलनी है इसके लिए? मैं अभी मार्क कराऊंगी बुक में. Okay. उससे पहले नो डाउट, श्योर? Ma'am, yes, कशिश, ma'am, हाँ like जी, बताओ I have बताओ. one doubt. Ma'am, so I heard like someone gave their rental property as something as their own assets. Ma'am, then what will happen if like someone is at rent? If it's rented out, then can they come and take that place? नहीं 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 बच्चे, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, यू कैन नॉट पुट द प्रॉपर्टी ऑन विच यू आर इन विच यू आर लिविंग, आप उसको अपना नहीं डिक्लेयर कर सकते. दैट्स अ फ्रॉड. Or ma'am, ठीक है, if the owner declares it, then सी वो तो बच्चे दैट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप एंड नो ओनर विल डिक्लेयर फॉर अ बैंक लोन ऑफ अ टेनेंट कि ये घर टेनेंट का है. ठीक है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स योर बिल्स हैव टू बी इन योर नेम. इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या मीटर नंबर, एंड इफ पॉसिबल वो घर के प्रॉपर्टी के पेपर जरूर देखते हैं. ठीक है, तो इतना इजी नहीं है किसी और के घर पे. सी आई एम नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी कि फ्रॉड नहीं होते. मेनी टेनेंट्स yes, हैव ma'am. डन इट. ठीक है, बट इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि कोई कैच कर लेता है, कोई नहीं कैच कर पाता है. बट अदरवाइज आप एक रेंटल प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बता के जब आप लोन लेते हो, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ फ्रॉड. बिकॉज कोलैटरल में जब आपको डिस्क्लोज करना है इज योर एसेट, नॉट समवन एल्सेज एसेट. Yes, ma'am. ठीक है, कशिश, एनी डाउट? No.
Chalo, let's start marking.